फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में लार्जली हम लोग बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स को देखने वाले हैं, विच आई रेगुलरली डू फॉर द लर्नर्स, जो स्पेशली जो मेरे फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स एक तरफ काफी वोलाटाइल है, दे हैव गुड वॉल्यूम। तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है बहुत ही बढ़िया रहता है ट्रेडिंग के लिए। तो कौन सा स्टॉक्स अभी हम लोग चेक करेंगे कि ब्रॉडली हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है एंड विच आर गुड टू रिमेन इन पोजीशन, और जिसमें एक्चुअली ढूंढना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज। तो नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट या लाइन चार्ट ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज अंडरग्राउंड सिलेक्शन इन ट्रेडिंग व्यू। एंड इसमें ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप बनाएंगे, जो बनाने के लिए मुझे चाहिए SDRSI X, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। एंड वी नीड SD रेनबो एसेट मास्टर और SD रेनबो V1 और एसेट मास्टर दोनों सेम है। तो बैंकिंग सेक्टर स्टॉक जो है, इसको हम लोग AU बैंक अल्फाबेटिकली प्राइवेट बैंक से स्टार्ट करेंगे टू पब्लिक सेक्टर बैंक को देखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं AU बैंक। AU बैंक जो है, ये इंपॉर्टेंट जो लेवल था उसका ब्रेकआउट दिया है, एंड ब्रेकआउट देने के बाद ब्रॉडली प्राइस वाइज सस्टेन कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट इट हैज गिवन द ब्रेकआउट। नाउ हम लोग डेफिनेटली कुछ पोजीशन तो बना सकते हैं, बट इट कैन ऑल्सो स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी। तो ये जीतेगा या स्ट्रगल करेगा, इसका मोर कंफर्मेशन हमें मिलेगा वंस द व्हाइट क्रॉस मूव्स अबव दिस लेवल 690। दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन कि या दिस स्टॉक इज नाउ रेडी टू गो अप। तो एयू बैंक में हम लोग पोजीशन तो जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं वीडियो में बोला था कि आई ओनली बी लुकिंग price above this, but this will only be a starter quantity. I want the white cross or the minimum stop loss to move above this. Secondly, मेरे criteria satisfy करना होगा, नहीं तो कोई significant quantity I'll not do. Only tracker quantity, tracker can be 1 or 2 stocks or 5%, मतलब quarter FOMO. It can be quarter FOMO or it can be even lower than that. Tracker is very small. And wait for more confirmation. Next, we have Axis Bank. This particular is not in a good phase. It's a full red candle. We'll avoid Axis Bank. Rather, AU Bank के ऊपर हम लोग नजर रख सकते हैं. Then we have Bandhan Bank. Not yet ready, not in a good mood. इंतजार के अलावा कुछ नहीं. Largely, once the long-term trend line is broken, price is sustaining above 214.15, then only I'll be thinking about Bandhan Bank, not before that. So AU Bank भी similarly बड़ा quantity, it's still not ready to do that yet. CSB Bank not good, हम लोग पहले भी देखे थे. सिटी यूनियन बैंक बहुत टाइम से इसने बर्बाद किया. इट्स मोर ऑफ अ ब्रेकआउट. काफी टाइम अटेम्प्ट किया, दो अटेम्प्ट, इट डिड नॉट सस्टेन ऑन द ब्रेकआउट साइड. So currently in such a case, it would be now best, before any kind of tracker, let the score satisfy rather than looking at the chart structure. course को satisfy होने देते हैं, because इतना टाइम पे कभी भी score was not fully satisfying an entry. All we could do is trackers, and every time the trackers are failing. Then we have DCB Bank. DCB Bank is not good, will not do. Dhanalakshmi Bank, bad situation. Last week हम लोग देखे थे, not in a good phase. Maybe a good stock, but not in a good phase. And I'm interested in only in good phase, gem phase, जिसमें stock फाड़ के बढ़ता है. And वो पकड़ने के लिए these are my important scores. So Federal Bank, no, not in that phase. We'll avoid Federal. Fino Payments Bank. Fino Payments Bank had a great opportunity. अभी भी इसमें lot of potential है Fino Payments Bank में. It is a good breakout जो हो रहा है, ये जो important level 450. Very confidently Fino Payments likely to go higher. ये बहुत बढ़िया बेस बनाने के बाद पिछले ओवरऑल 1 2 3 4 6 वीक्स लगातार 1.5 मंथ से स्टेडी स्ट्रेंथ दिखाया, एंड फाइनली ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसको तोड़ दिया. अब नेक्स्ट जो लेवल फिनो के पास है
that will be around 500 area. So that's very likely jahan pe Fino Payments Bank is heading. And after heading, I expect consolidation, but ultimately it would be aiming for a breakout. So Fino Payments Bank is one that is in our criteria list. HDFC Bank, no, not at all. It's satisfying our criteria, will not remain. ICICI Bank, sorry for that call was coming. ICICI, let's look at that. It's not satisfying the score. It's trying to go up. Tracker के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे because the score is not satisfying. The breakout very likely to fail. And short term momentum is bearish, मतलब tracker भी नहीं करेंगे. In fact, tracker के लिए भी short term momentum bullish चाहिए. Now it's IDBI Bank of failure, will not do anything. IDFC First Bank, similar story, will not do anything. Then we have IndusInd Bank. IndusInd Bank again will not do anything. Let the comeback fully happen. एक पूरा ग्रीन कैंडल साथ में स्कोर तब जाके कुछ करेंगे. जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी कुछ नहीं करेंगे. Then we'll have Karur Vysya Bank. उसमें भी will stay put. This is short term momentum. bearish हो चुका है. Then we have Kotak Mahindra. It's not sell signal. हम लोग इसमें नहीं है बहुत टाइम से. कर्नाटक बैंक not good. It's more of a flat. देखते हैं फ्यूचर में अच्छा हो सकता है. Once ये बेस लेवल क्लियर हो गया 230, then only it can become quite good. एक बार अलर्ट को और थोड़ा नीचे देते थे 230. Once it crosses above the level, then only it might look good. और मुझे बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन चाहिए स्टॉक में. स्ट्रेंथ स्कोर 70 चाहिए, तब जाके कर्नाटका बैंक आई विल बी इंटरेस्टेड. RBL Bank not interested at all. Background is red, candle red, score kharab. Similar story with South Bank as well. South Indian Bank not good. Suryodaya, it failed the last attempt. Since then consolidating. It will be a future opportunity, this particular stock. यहाँ पे बेस बनाने के बाद then only will have opportunity, but currently सूर्योदय रेडी नहीं. जब कोई स्टॉक रेडी नहीं है हम लोग इन्वेस्ट और या स्विंग इन्वेस्टिंग उसमें नहीं करेंगे. सिमिलरली तमिलनाडु मर्का बैंक कम बैक हो रहा है, दिख रहा है, बट नॉट एवरी कम बैक वी आर इंटरेस्टेड. तमिलनाडु मर्का बैंक लेट इट क्रॉस अबव 530, तो another 10% छोड़ देंगे. एब्सोल्युटली. एंड इसके इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा तमिलनाडु मर्का बैंक को. मुझे स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा. देन ओनली I'll go for Tamil Nadu Marka Bank. And उस लेवल जो का जो बात कर रहा हूं that is around 500 psychological level के ऊपर, and specifically more specifically 525 के ऊपर strong sustenance means with all the momentum, then we have some good. Ujjivan Small Finance, good base area पे can make a comeback, but कोई भी bounce back bottom hunting नहीं. We want strength. Buying a stock into strength, not in the bottom hunting. Yes Bank not good. हम लोग इसको I'm closely watching क्योंकि this can be an opportunity rare later in future, but not right now. Weekly chart पे ध्यान रहेगा for me with rainbow buy signal के साथ. तो ये रहे दोस्तों discussion on the private bank. Let's look at the public sector banks. Public sector banks में let's make it alphabetical order. Alphabetical order के साथ it's not good. Bank of Baroda कितना टाइम से हम लोग अवॉइड कर रहे हैं. I think आप लोग याद होगा वीडियो देख रहे हैं तो we are not into this. We are not losing money, that's for sure. कनाडा बैंक जितना भी फॉल होने दीजिए. अगर आप मेरा वीडियो के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सुन के मत ट्रेड कीजिएगा, याद रखिए. बट एटलीस्ट वीडियो सुन रहे तो दिख रहा है कि इट्स फ्रॉम द चार्ट्स, राइट. चार्ट से क्लियरली दिख रहा है दीज आर नॉट गुड. तो मेरा सुन के नहीं, अगर आप देखेंगे तो भी आप सिमिलर चीज ही देख पाएंगे. बट बहुत लोगों को ये भी टाइम नहीं होता या एनर्जी नहीं रहता कि इतना देखे. सो फाउंटेन ऑफ गोल्ड हेल्प्स अ लॉट कि इट क्विकली पता चल जाता है वेयर इट इज एंड वेयर इट इज नॉट. सो पीएनबी जितना भी आपको बैंक अच्छा लगे, currently it is not in a good phase, sorry to say. So avoid such stocks because पहला principle is protect the money, second principle is to make the money. So now it is clearly bearish, significant bearish state.
in State Bank of India as well. I think आप अभी आप लोग खुश होंगे कि हम लोग अच्छा इसमें पोजीशन नहीं है. अगर आप कोई भी सुन रहे हैं मेरे बात तो याद होगा कि आई एम वार्निंग अगेंस्ट दिस पोजीशंस इन पीएसयू बैंक. एक के बाद एक हम लोग रिजेक्ट करते गए. स्टॉक में रिजेक्शन इज अ ग्रेट प्रिंसिपल. तो अभी क्या दिखा ब्रॉडली बैंकिंग, नॉन ऑफ द मेजर स्टॉक्स आर गुड, ओनली फिनो पेमेंट बैंक इज गुड. Some future opportunity can happen in Surya Roshni, Ujjivan, but currently there is not much. Only one bank that is satisfying the criteria is the Fino Payments Bank. Even Fino Payments Bank में एक चीज ध्यान रखिएगा, it's a good one. It has given a good breakout, but in the daily chart and weekly chart also, look at the value at risk. Value at risk with a 95% confidence level, the value at risk is quite high. Fino Payments Bank. अब डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में करंटली इट्स वी कांट बाय. लास्ट ब्रेकआउट इज फेलिंग. So it is in the list does not mean कि हम लोग जंप करके उसको बाय करेंगे. It is selected and after selection we'll have to come to the daily chart, select cash stocks less than weekly. यहाँ पे देखिए it is satisfying this criteria broadly, but we have a background yellow short term momentum bearish. ऐसे में हम लोग नहीं रहेंगे, will exit for sure. And breakout fail हुआ तो opposite side और खराब हो सकता है. And value at risk is around 12%. You can with a 95% confidence level in the next 5 weeks, if you hold this stock, your downside should not exceed more than 12%, but that's a lot of money. Maybe this is a projected, this is a statistical measure, not a real life measure. But with a short-term momentum bearish, we will not remain in Fino Payments Bank. But as a selection criteria, Fino Payments Bank is in our list. So ये जो down move हो रहा है, हो सकता है उसके बाद up move आए जिसमें we'll get the entry opportunity. So इस तरह मैं स्टॉक सिलेक्ट कर करके आगे बढ़ता हूं. आई होप ये डिस्कशन जो मेरे स्टूडेंट्स आपको हेल्प हुआ है. अगर हेल्प हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. And as thank you members for joining my channel, as a token of thanks, this video will be released first for you, then for the general public. Thank you so much and all the best to all of you from my side.